So, dear all, welcome. Today we are going to do one numerical of salaries chapter. We have done all the aspect of salaries in the video tutorial shared earlier, the allowances parts, and then in the form of perquisites, and then provident fund separately, and lastly the deductions. All have been shared with you, and I hope you have gone through. And now today I'll be taking up one numerical of this chapter, that how it has to be solved. So firstly, let me tell you that this numerical, this came in exams in 2017 in one of the university's question. So Mr. X belongs to Ranchi, and there the population is given 15 lakh and the details are provided to us. So we will be taking up those details and side by side I'll be discussing. So the basic salary is given 12,000 per month, and then profit bonus is given. It is 12,000. Then it is given commission on turnover. Commission on turnover is given rupees 6,000, rupees 42,000. Then entertainment allowance is given. Now this entertainment allowance is rupees 2,000 per month. It is 2,000 per month. Then you are given with club facility. Club facility rupees 6,000. Transport allowance 1,000 per month. Then the car is also provided. The car is of more than 1.6 liter capacity, and it is for both use, that is both personal and private use. So I'm writing just both use, and the expenditure is met by employer. So then is the data regarding rent-free house. So rent-free house provided by employer, and it is written the lease rent paid by employer is 6,000 per month. So just have a look at the question which we are going to solve, variety of things in it. And then free education, and it is for 3 children of the employee, and the total amount is given, that is for the 3 children is 22,500. And the thing which is mentioned is that the bills are issued in name of the employer. So bills are issued in name of the employer. It means employer is providing this facility of free education. Then is the gas, electricity, water supply, and here it is written that the bills are issued in name of the employee but are paid by the employer. Now please, this is 22,500, and over here we are given with the amount that is 16,800. So this is all of the question, and we have to compute the salary income for our assessment year 1920. So you can have a look. Now side by side let us do the discussion, and let us try to put up these things in the system. We will prepare a performer. So computation of, let me prepare a proper performer. I hope you are able to see. So computation of taxable salary
of Mr. X for the assessment year 1920, and we have the things to be written under this, the details and the amount. And then I start with the first one. Now have a look over here side by side, and we are going to put. So first is the basic salary, and the basic salary is 12,000. So let me write down the basic salary. So the basic salary is 12,000 per month. So 12,000 into 12. So it comes out to be, so I have kept calculator also side by side. So this is 14,400. So then is the next one. Next is profit bonus. Just see jo diya hai, I am putting it up in the same order. Main thing we have to find out the taxable salary. So profit bonus is written. So I have written the profit bonus. Then the next is entertainment allowance. It is also taxable. And this person is not government employee, so no deduction is to be allowed to him. So entertainment allowance is given to this, that is 2,000 per month. So 2,000 into 12, 24,000. Then there was commission on turnover, which this employee had received. So this is Mr. X is receiving 42,000 as, you can have a look, 42,000 as the commission on turnover. Now comes the club facility, and for here we need to do certain thinking. Club facility, the provision says if the club facility is provided to all employees of the organization, then the value is nil. And if it is a health club facility or any facility which is again provided to all employees of the organization, the value is nil. If the club facility is provided for the official purposes, then again the value of perk is nil. But if the person is allowed to have this club facility for his personal purposes, then it is taxable. But as earlier things are not mentioned, just this is mentioned, so we can take it as taxable only. So club facility 6,000 I am taking. Had they mentioned that it is for the essential to join this club facility for the official purposes, then this would have been taken up as exempted. Now the next is transport allowance. Again, a point to think. Transport allowance till last year it was under section 1014(2) and exemption was given. But now it is, the exemption has been omitted. This section, this transport allowance has been omitted, so it means it is now coming under the taxable category only. So 1,000 into 12 is 12,000, because still it is not said that it is exempted. It is written that it is omitted out of 1014(2). So the exemptions are omitted. So if again the employer is giving this sort of allowance to the employee, then it means it is going to be fully taxable. Then after transport allowance is car is of more than 1.6 liter cubic capacity, both uses and the expenses are met by the employer. So the facility is of large car. And when we think of car, one word comes into mind, that this employee has to be which employee? The specified employee. So if I say the specified employee, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई का एक था 50,000 से ऊपर होनी चाहिए सैलरी आफ्टर डिडक्शन. तो आई कैन सी ओवर हेयर पहली फिगर ही बहुत ज़्यादा हाई है, 1,44,000 है. अभी तो ये भी ऐड होना है, ये सब ऐड होने, तो जो कैश फॉर्म में मिल रहा है दैट इज़ प्रॉफिट बोनस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया. और उसमें से इवन इफ आई डिडक्ट 40,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, then also it is more than 50,000. So this person is a specified employee. The facility of large car 2,400 into 12, and this comes out to be 28,800. So car we have written. Then is the next thing, after car comes the rent free house. It is provided by the employer. दिया employer ने, लेकिन एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे लेके आगे एम्प्लॉई को प्रोवाइड किया. तो किराया एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 6,000 पर मंथ. सो रेंट फ्री अकोमोडेशन needs certain calculation
तो I will be writing over here working note 1 and we will be solving it later on. So let us pursue further. Firstly put up the whole things, then the working notes part we will be performing. Then is the next one, that is free education. Free education is for 3 children. Now this free education, again when I say the education one, this is again an perk which is taxable for specified employee, and we have just now checked that Mr. X is a specified employee, and this is for 3 children. बिल इज़ इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने ये सर्विस, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है एम्प्लॉई को उसके 3 बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ से ये अज्यूम किया जा रहा है कि इफ़ बिल इज़ बीइंग इशूड, इस मीन्स एम्प्लॉयर का अपना इंस्टीट्यूट तो नहीं था, एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी इन सम अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो तब ये बिल है। तो ये अमाउंट जितना भी आ रहा है दैट वी विल बी टेकिंग एज टैक्सेबल बिकॉज the cost of education in similar institute in a similar locality is not given. Some authors or some books, they deduct 1000 per month out of this because the cost of education अगर institution employee का employer का अपना होता, they do that, but that is wrong. यहाँ पर तो वो वैसे क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा, बट जस्ट टू टेल यू कि अगर ये अपने इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा होता एजुकेशन, सो इवन देन हमें वो 1000 पर मंथ से अगर कॉस्ट ज़्यादा होती तो 1000 माइनस नहीं करना था, बिकॉज ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दिल्ली पब्लिक स्कूल्स का 2011 के केस की हेयरिंग में ये फाइनल हुआ है। ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर। फ्री एजुकेशन इज़ 22,500, हमने ऐसे ही ले लिया क्योंकि बिल एम्प्लॉयर के नाम पे इशूड है, एंड जब भी एम्प्लॉयर के नाम पे बिल है इट मीन्स किसी अदर इंस्टीट्यूट ने में प्रोवाइड हो रही है ये एजुकेशन, तो जो बिल है वो ले लो। यहाँ अगर सिमिलर लोकेलिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई बिल दिया है तो वो ले लो। नाउ इज़ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। अब यहाँ पर बिल आर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, इट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बट इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, तो ये सेक्शन आ गया हमारा 17(2) and 4, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज मेट बाय द एम्प्लॉयर। तो ये पूरी तरह टैक्सेबल है। तो कितने का बिल था? द बिल इज़ ऑफ 16,800, तो आई विल बी राइटिंग 16,800। तो वी हैव टेकन एवरीथिंग। तो जब हम इन सबको टोटल कर लेंगे तो वी विल बी गेटिंग वन थिंग, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द ग्रॉस सैलरी। विल बी गेटिंग ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हमें देनी है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सबसे पहले देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अप टू ₹40,000। तो हमें पहले यहाँ टोटल देखना है, उसका कंपैरिजन करना है, वो कम है या ये कम है। ये तो हमें टोटल सही लग रहा है, 40,000 से बहुत ज़्यादा आएगा, तो हम यहाँ पे 40,000 लिख लेते हैं। सो देन इज़ एंटरटेनमेंट्स मिलना नहीं, प्रोफेशनल टैक्स की कोई डिडक्शन है नहीं, सो वी आर डन। जस्ट करना क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं तो रूल क्या कहता है, यहाँ पर मैं वर्किंग नोट 1 साथ साथ में बनाती हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी। वर्किंग नोट में रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, बिकॉज इट इज़ अ लीज्ड प्रॉपर्टी, मतलब एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके प्रोवाइड की है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पर्क? वैल्यू ऑफ पर्क इज़ 15% ऑफ सैलरी, और सो थोड़ा 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर whichever is less. So 15% of salary. अब सैलरी की बात जब आती है तो सैलरी इज़ वेरी ब्रॉड फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। यू कैन सी द रेंट फ्री अकोमोडेशन ट्यूटोरियल अगेन इफ़ यू वांट टू रिवाइज। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो आएगा उसको देखें क्या क्या आना है।
बेसिक सैलरी मैं टिक लगाई जाऊंगी, बाद में कैलकुलेटर पे टोटल कर लेंगे। प्रॉफिट बोनस यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस यस, कमीशन ऑन टर्नओवर यस, क्लब फैसिलिटी नो, एक पर्क की कैलकुलेशन में दूसरा पर्क नहीं आता। एंटरटेनमेंट अलाउंस यस, कार नो, क्योंकि ये भी पर्क है, बेनिफिट है, ये नहीं आएगा, बेनिफिट्स नहीं लेने। इसी तरह फ्री एजुकेशन भी बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं आना। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई भी बेनिफिट है, तो ये भी नहीं आना। तो आने क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन अलाउंसेस वो ही आएंगे, प्लस अगर एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव दी होती प्रीवियस ईयर की तो वो आना था। तो नाउ वी डू द टोटल्स। सो दिस इज 1,44,000. I need to have time. 1,44,000 plus 12,000, doing it on calculator side by side, plus 24,000 plus 42,000 plus 12,000. So this figure is coming out to be 2,34,000. So let me put it over here. 15% of salary 2,34,000 का हमें लेना है 15%. तो 15% of 2,34,000. So this I will be calculating into 15%. So this comes out to be 35,100. Or rent paid by the employer. So how much was the rent paid by the employer? Let us see the question. The rent paid by employer was rupees 6,000 per month. The rent paid by the employer was 6,000 per month. तो 6,000 per month का मतलब क्या हो गया, 72,000. तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस. सो दिस इज लेस, सो वैल्यू ऑफ पर्क इज 35,100. सो 35,100 आई विल बी एडिंग इट ओवर हेयर. इस सब का कर लेना है 35,100. जब हमने लिख लिया तो अब हमें इन सब का टोटल कर लेना है. टोटल करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, उसमें से 40,000 माइनस करेंगे फॉर द स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर दैट वुड बी टैक्सेबल सैलरी. सो वी कैन डू द टोटल्स नाउ क्विकली. So let us do the totals so that the question is over. So we have 42,000, then I will take yes, and then I hope the rules are clear. If you have gone through all the video tutorials and you have revised it side by side, then this thing is not going to be a problem for you. You are really going to enjoy doing salaries numerical from your books, because ऐसे समझो कि if I am doing a job तो मेरे को क्या टैक्स देना है, मेरी सैलरी इनकम पर क्या टैक्स आएगा, क्या बनेगा, तो क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, तो उसके लिए we should be prepared. So take it like that in your mind and then you do the solving part, and you will really find very interesting calculating the salaries. So this is also, this was 2017 question of a certain university which we have solved of and then I hope to see that you people revise well and see that how the things are done. So God bless you, take care. So that's it for the time being. We'll come back with another video tutorial. Hope one more numerical and then pursue to the next part of income tax. Thank you.